Okay, today we are going to see the heat engines in the thermodynamics. Thermodynamics का main application तो यही है, heat engines. So heat engines are device which converts heat into useful work. Heat engine जो है heat को useful work में convert करता है. You seen heat engine? It is fitted in all the vehicles, two-wheeler, three-wheelers, four-wheelers and multi-wheelers. सभी में heat engine है. It converts heat energy into useful work. Aeroplanes, ships, all they have the heat engine. British were very strong in thermodynamics. They made the heat engine and they traveled all over the world and ruled also. So heat engine में one is the hot reservoir which will supply the heat Q1 per cycle to the working substance. यहाँ पे working substance रहेगा. Which can be water, that is the steam. In fact, water will get converted into steam, and or it can be gasoline. Gasoline means petrol, diesel, gases, all called gasoline. They get the heat and they get ignited, or they get the energy content and then do the work. And some heat is rejected, Q2, per unit cycle. All are per cycle, or per unit cycle. One cycle of operation. Cycle was circular motion वाला cycle नहीं, one cycle of operation. One cycle of operation involves so many steps. And finally, Q2 will be rejected to the cold reservoir. Automobile में Q2 क्या रहती है, जो silencer से gases बाहर आती. Atmosphere is the cold reservoir. Internal system is the hot reservoir जहाँ पे heat develop होती. In case of steam engine, there will be boiler here. Then steam work done will be there. Then steam will come to the condenser, and then again cycle of operation starts. So that's how it works. It is just basic diagram, and its efficiency is defined as work done per cycle, ratio of work done per cycle to the heat input per cycle. Heat input is Q1, which can be heat extracted or absorbed from the hot reservoir. Hot reservoir will be maintaining its constant temperature T1. Cold reservoir will maintain its constant temperature T2. It will not fall down. It will not fall. Suppose you take out the heat Q1, it will maintain its temperature T1. It will not drop. We call it infinite heat capacity. And it will receive Q2. It will maintain its temperature T2. It will not shoot up. They are of infinitive heat capacity. Efficiency is the ratio of work done to the heat absorbed while the system in one cycle of operation, or heat input, we can call it Q1. All right. From heat flow diagram, you can see heat coming in is Q1, and it should be equal to heat energy going out. One is the work done, other is Q2. So that is what I have written from heat flow diagram. Heat flowing in is equal to heat flowing out. Total heat flowing in is equal to total heat flowing out per cycle. So Q2 को इधर शिफ्ट कर देंगे. It will be Q1 minus Q2 is equal to work done. Work done is the difference of heat taken to the heat rejected. जो heat ली और जो reject की, उसका जो difference है, that is equal to work done. And here we are neglecting the friction losses and all. Dissipating losses होंगे थोड़ा बहुत work done कम होगा, but just theoretically we are going. All right.
आइडियल इंजन ले रहे हैं हम लोग. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ W हियर, it is Q1 minus Q2 upon Q1, which in fact can be written like this: 1 minus Q2 upon Q1. This value will be, efficiency will be always less than 1, because some heat has to be rejected. Without rejection of heat, working is not possible. That is the second law, in fact, which we already have seen. तो heat कुछ reject होती है, नेचुरल मतलब law of nature ही है वो. There is some limitations on the first law. First law के according not required, but second law states that heat has to be rejected. 100% work will not be there, even if it is ideal. No friction, then also 100% work will not be there. So this is the basics of heat engine. Carnot was the person first who made the first ideal heat engine, in which Carnot heat engine is the ideal reversible engine, which involves two adiabatic process, two isothermal process, involves two isothermal and two adiabatic process. ठीक है. आइडियल रिवर्सिबल प्रोसेस बनाने के लिए, आइसोथर्मल रिवर्सिबल बनाने के लिए isothermal and adiabatic processes help him to work as a reversible process. आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना, और रिवर्सिबल की कंडीशन यही थी, इट शुड बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड सो ऑन. तो Carnot scientist, he made the ideal reversible engine, and whose efficiency is maximum between two temperature limits. Now in this engine, Q directly proportional to T. This proof we are not doing it now. Otherwise, isothermal process and adiabatic process को लेकर we can prove it. Okay. Proof we can do it afterward. But main point पे focus करते. Heat directly proportional to temperature. Therefore, in this process, it is proved Q2 by, in this proof, नहीं इसको direct नहीं लिखते. In that, we have proved Q2 by Q1 comes to be T2 by T1. In this engine, this is one of the proof there. Therefore, यहाँ पे जो ये तो जनरल फॉर्म था फॉर एनी इंजन, जनरल फॉर्म. Q2 by Q1 का फॉर्मूला पुट कर देंगे. Q2 by Q1 will be T2 by T1. This is the efficiency, and of course also eta is W by Q1. Both formulas are used together, and it has 1 minus T2 by T1. This Carnot engine. This will be, of course, we can say it is T2 क्या है? Temperature of cold reservoir. इसको sink, we also call it sink also. इसको sink भी बोलते हैं. This is also called source. Cold reservoir का temperature कम होगा. You can see T2 will be less than T1. Efficiency में 1 minus something is less than 1. तो less than 1 होगा. और दूसरा point, if T2 is infinite, then T2 is 0. It is in Kelvin, you know. Single temperature should always be put in Kelvin. Then only eta will be 1. So 0 Kelvin is
not achievable. In lab also, it is very difficult to achieve. Or T1 is infinite temperature, infinite Kelvin, which is also not possible. Therefore, efficiency has to be 1 for any engine. T2 temperature will be less at low temperature. अगर suppose 2 temperature दे दिए, we are not mentioning anything. It means T1 is a higher temperature, T2 is a lower temperature. T1 has to be greater than T2. Source का temperature है, hot reservoir का है. It has to be more. All right. Now, तो ये formula learn कर लो. Efficiency is output upon input. Generally, output is work done, input is heat supplied, and which is also equal to 1 minus T2 by T1, particularly Carnot heat engine. अपने course में यही है बस, Carnot heat engine. That's all. This is the only formula you have to remember for heat engine. These two, all the numericals will be done with these two only. Only thing you have to remember, temperature should be in Kelvin. In Kelvin, or heat, or your W and Q1, they should be in joules or calorie. Either both should be in calorie or both should be in joules. Otherwise, the efficiency will go wrong. Both should be in same system of units. All right. इतना याद करना है बस. Only you have to remember this, and temperature should be in Kelvin, and that's all. Heat engine. Nothing much you have to worry about now for your competitive examination. But this proof we can see it later on in the book, textbook. You can follow. Now, my question is this. देखो पहला question मेरा ये है, if temperature of hot and cold reservoirs are doubled, then efficiency eta will always remain same. True or false? उसकी efficiency same रहेगी. अगर हमने T2 को भी डबल कर दिया, इसको भी डबल कर दिया, efficiency is this. Efficiency का formula क्या है, by the way? Let me write. तो ऊपर का स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, बोलो. क्विक आंसर. कम ऑन. Chitisha, can you say true or false? लोग एक तो म्यूट करके रखते हो, फिर बहुत टाइम लगाते हो, इसलिए हमने बोला भी है वीडियो ऑन एंड साउंड सिस्टम ऑफ, आई मीन अनम्यूट. बोलो जोनन, अरे देर तुम लोग हो लाइन पर कि नहीं? पता लगा ऑन है कैमरा, दैट जूम इज ऑन, यू आर ऑफ. आदित्य, nobody is responding. Can you hear me? Yes, sir. बोलो. ट्रू और फॉल्स? आंसर इज, तो इसको भी डबल कर दिया, इसको भी डबल कर दिया, ट्रू विल गेट कैंसल. आंसर कैन बी ट्रू, बट सपोज both are in Kelvin, both are in degree Celsius, then it will be false. Kelvin में डबल किया तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना. बट ऑलरेडी सपोज ये डिग्री सेल्सियस में दिया है ना, तब 2 टाइम्स नहीं होते वो. तो आंसर इज फॉल्स. It is true only for, it is true. यहाँ पे हमने ऑलवेज लिख दिया ना, इसलिए it is true
if both temperatures are in Kelvin. Both temperatures are initially in Kelvin. Are initially in Kelvin. All right. अगर डिग्री सेल्सियस में होंगे तो efficiency will get changed. What about this question? In which case efficiency will increase more if we decrease the temperature of cold reservoir, CR stands for cold reservoir, by delta T, or increase the temperature of hot reservoir by same amount. देखो, just going back to the formula, यहाँ पे efficiency can go up, efficiency जो है increase होगी if this term is reduced. तो माइनस वाला टर्म छोटा हो जाएगा और this temperature is increased, then also this quantity will reduce. Either you reduce the sink temperature or increase the input temperature, that is hot reservoir or source temperature. Are you getting it? अगर तुम, if you are driving your vehicle in winter season, so T2 is less, surrounding temperature is less, efficiency goes up. Winter में efficiency goes up, even if they are not Carnot engines, now they are modified, but most of the time this formula is there, valid. Yeah, this is just basics. Other factor may change, but अगर suppose we are talking about same engine, चलो इसी engine की बात करते हैं. You drive it in the winter, temperature T2 goes down, keeping the source temperature constant. तो winter में cold reservoir are generally surroundings, generally, but ठीक है. तो ये okay, we are focusing here. ये नीचे गया तो ये ऊपर जाएगा और ये ऊपर गया, then also suppose इसको हमने 1 डिग्री डेल्टा टी माइनस किया तो एफिशिएंसी बढ़ गई, और इसका डेल्टा टी प्लस किया तो एफिशिएंसी बढ़ गई. इन विच केस इट विल इंक्रीज मोर. You can put it and conclude. देख लो किसमें take the efficiency. Either you can do it one, ऐसे कर सकते हैं. Suppose assume T2 minus T1. T2 is always less. T2 को you take 2 डिग्री और इसको 3 डिग्री ले लो, 3 केल्विन. उन दोनों में सेम अमाउंट 1 डिग्री का माइनस करके देख लो, इसमें 1 डिग्री प्लस करके देख लो. अदरवाइज यू डू इट लाइक दिस. फर्स्ट केस में क्या करना है, 1 माइनस T2 है ना बाई T1. फर्स्ट केस में इसको डिक्रीज करना है माइनस डेल्टा टी से. तो सिंप्लीफाई कर लो इसको, T1 माइनस T2 प्लस डेल्टा टी. तो कितना आ रहा है फर्स्ट केस में एफिशिएंसी, प्लस वाले टर्म से एक साथ कर लो. सेकंड केस में व्हाट वी आर डूइंग इट, eta2 इज इक्वल टू 1 माइनस T2, इसमें से डेल्टा टी प्लस कर रहे हैं. टेक एलसीएम, T1 प्लस डेल्टा टी, T1 प्लस डेल्टा टी माइनस T2. न्यूमरेटर इज सेम इन बोथ. यहाँ पर टर्म छोटा है और ये बड़ा है, तो eta1 will be greater than eta2. Therefore, by decreasing the cold reservoir temperature, efficiency will be going up, provided change is same, delta T का equal change है. ठीक है, ऊपर वाले टर्म तो सेम है दोनों में. डिनोमिनेटर में दिस इज मोर, दिस इज. अभी हमने एलसीएम लेने के बाद भी अटके,
We're not talking about this term only. We have taken the LCM, then we are seeing. In this case, if this is more, this will be less. All right. To better decrease of cold reservoir will increase the efficiency further. The 3 Carnot engines operate between the reservoir temperatures 400, 500 and 600, 800, 400, 600. तो इसमें देखो तो rank the engines according to their thermal efficiency, greatest first. तो कैलकुलेट करना पड़ेगा 1 minus T2 by T1 से. You can find out कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर कम होने से बेनिफिट होता है. तो सी ये वाला आंसर आएगा फर्स्ट, इसमें मैक्सिमम आएगा. और डी ओके, यूज द फार्मूला. तो आंसर आएगा सी, बी एंड ए. कैलकुलेट कर लेना इसको. तो T2 विल बी ऑलवेज लेसर टेम्परेचर. ये 400 वाला T2 रहेगा, इसमें 600 वाला, इसमें 400 वाला. One more point we can say. Temperature difference, more the temperature difference, that may give you more the efficiency. इसमें temperature difference 200 है, here also 200, but T1 is lesser, 600 is more. So efficiency in case C is coming more, and here temperature difference is less, and this temperature is 500. So you can find out and write the sequence which one is greatest by putting the values. NCERT book question: steam engine delivers this much of work per minute. यहाँ पे per minute है, so we'll maintain per minute only. And source delivers this much work. ये W दिया, source and source source supplies the heat this much. Actually यहाँ पे printing error है. Source supplies this much of heat. Source supplies this much of heat per minute from the boiler. Boiler रहता है उसमें, which is heating the water and making the steam. What the efficiency and how much is the heat wasted? The efficiency is the work output upon heat input. So 5.4 into 10 to the power 8, 3.6 into 10 to the power 9. If you had percentage में answer दिया तो this much percent. If you solve it, it will come 15%. ठीक है. So it will, in fact, it will come 54. Do we get 15%? देख लो. 54 by 3.6. And how much heat is wasted? The difference है दोनों का. Heat wasted, that is Q2 is Q1 minus W. That will come
3.1 into 10 to the power 9 joule. So Q2 has, that is wasted only, and Q2 goes into the cold reservoir. It is a wastage of heat. Quite a lot of wastage. How much percentage of heat waste is there? Quite a lot, है ना? You can find out. If 15% work हो रहा है, तो 85% waste होगा. It must be 85%. So heat engines are not that efficient, you know. Lot of wastage of heat is there. All right. This is your NCERT book problem. (12.8). It is not directly related to heat engine. It is just simple logic question. Electric heater supplies the heat to the heat at rate of this much, 100 joules per second. That is 100 watt. If system performs 75 joules per second, 75 watt अगर उसका work हो रहा है, तो at what rate internal energy is increasing? तो work कितना हो रहा है, तो internal energy 25 watt से internal energy बढ़ेगी. This is not heat engine question. This is gas. Suppose gas है, उसको हम पिस्टन है सिलेंडर में, इसको वर्क दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तो ये वर्क कर रहा है कितना, 75. तो बाकी कहाँ जा रहा है, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी. तो दिस इज नॉट रिलेटेड टू हीट इंजन. दिस इज जस्ट heat is supplied to the gas and gas is doing work and some energy is stored in the form of internal energy. So इसको, okay, this is the other question, important question. We can do it now. Try yourself first, then I am solving it. Do it and tell me the answer. Quick. T1 is how much? T1 is 627 plus 273. कितना हो गया ये? 900 हो गया Kelvin. T2 is 27 plus 273. That's 300. Eta will be 1 minus T2 by T1. That's 1 minus 300 by 900. That is 1 minus 1 by 3. That's 2 by 3. That's good. Efficiency is good here. But generally, that much is not there. All right. What next? इसके बाद क्या करें? Efficiency आ गई. Work done पूछा है ना. Or Q1 is given. What is the first term? Q1. Q or W is asked. So we also know eta is equal to W by Q1. Work done is equal to eta into Q1. Eta is 2 by 3. Q1 is 3 into 10 to the power 6. It comes to be 3 gets cancelled. 2 into 10 to the power 6. ठीक है, क्या आंसर है? Which one is the answer? None. नहीं, जीरो तो B. क्यों? ये तो इतना आ रहा है. कैलोरी में आ रहा है. ओके, तो इसको कैलोरी को इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 4.2 से जूल में कन्वर्ट करने की. देयर 4.2 into 2 into 10 to the power 6 joules. So it is 8.4 into 10 to the power 6 joules. So sometimes they write this answer. यहाँ पे ऐसा दे देंगे 2 into 10 to the power 6 joules. So you tend to write this because we are in lot of pressure while in competitive examination. इस तरह की silly mistakes हो जाती है, तो be careful. We have calculated in calorie. Answers are given in joule, so you have to convert it. All right.
No problem. This is important question for JEE and NEET. इसमें बहुत सारे वेरिएशन करके they will ask you. जैसे ये हो गया टेम्परेचर इनिशियल इफिशिएंसी दिस मच देन 62 टेम्परेचर उसका T2 is lowered by 62 efficiency has gone this find T1 T2 to make the equation 1 equation 2 solve it formula being used is same formula एक ही formula है इसके लिए so you can do it you can take the snapshot and do it and its option will be D option I guess. This is also the question asked. So many questions. This question is also based on efficiency. So we'll do it at end, or you can take the snapshot. We'll do it later on. So now we'll see the refrigerator and heat pumps. Refrigerators are the devices which keeps the objects cold, and it is reverse of heat engine. Reverse of Carnot heat engine है ये, ठीक है? रिवर्स मतलब एरो रिवर्स कर दो सारे. पहले एरो कैसे थे लाइक दिस, तो रिवर्स करनी है एरो, ठीक है? तो सम वर्क हैज टू बी डन. ओके, द वर्किंग सब्सटेंस, यहाँ पे जो वर्किंग सब्सटेंस होगा यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस फ्रेऑन गैस होती है, विच इज फ्रेऑन गैस इज उसका कूलिंग फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होता है, राइट? एंड इट इज वर्किंग एज ए working substance. It will absorb the heat and then take out the heat from the objects. I mean, it will absorb and then it is compressed again and expanded to the low temperature, gets cooled, absorb the heat again, and cycle of process goes on. We'll see basic cycles of process. पहले यहाँ पे इसका diagram समझते हैं. ये कोल्ड रिजर्वायर, दिस इज द इनसाइड ऑफ द रेफ्रिजरेटर. वहां से हीट निकालना है. ऑलरेडी कोल्ड है, फिर भी हीट निकालना है. तो फर्स्ट लॉ से तो देयर इज नो प्रॉब्लम. सेकंड लॉ सेज इट कैन नॉट बी डन विदाउट द एनी एक्सटर्नल सोर्स. एक्सटर्नल सोर्स चाहिए हमें वर्क डन. तो कौन करता है? कॉम्प्रेसर करता है. कॉम्प्रेसर इज फिटेड इन एवरी रेफ्रिजरेटर विच विल डू दिस जॉब. रिवर्स फ्लो ऑफ हीट पॉसिबल. कोल्ड में से हॉट में लेके जाएगा. वो कैसे जाएगा? आई टोल्ड यू gases are used which are expanded suddenly, gets cooled down and absorb the heat from the interior of the refrigerator. ठीक है? तो कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर स्टिल रिमेनिंग T2, हॉट का T1 था. वही डायग्राम है, एरोज आर रिवर्स, है ना? तो here working substance is the gas which is suddenly expanded. उससे क्या होता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे एक्सपेंशन होता है. एडियाबेटिक प्रोसेस जैसे समझ लो, सडन बस्टिंग ऑफ टायर. एकदम से it cools down. It will be cooling down and will be absorbing the temperature of surrounding. तो सडन लो प्रेशर पे टेम्परेचर ड्रॉप होता है, cools down and convert into the liquid vapor mixture, है ना? And second process क्या है? Absorption. कहाँ पे expansion होता है? If you open the refrigerator, जहाँ पर chill ice box होता है ना, is that place is the expansion. तो वहाँ पे temperature minimum होता है. Water gets freeze there, ice formation. और नीचे जो है temperature slowly it is more. Minimum is at the top where expansion, sudden expansion takes place. All right. तो उसके बाद it will absorb the heat from the objects kept inside the refrigerator.
है ना, एंड देन हीटिंग, इट विल गेट हीटेड अप इटसेल्फ। तो क्या करते हैं उसको कंप्रेसर से, हीटिंग अप ऑफ द वेपर ड्यू टू द एक्सटर्नल, अभी इसको कंप्रेसर से बाहर निकालते हैं तो इट इज फर्दर हीटेड अप, है ना, देन रिलीज ऑफ द हीट to the surrounding, bringing it to the initial temperature and completing the cycle. ठीक है, तो पीछे जो कंडेंसर रहता है ना, कंडेंसर, वहां पर सराउंडिंग, वहां पर हीट इज ब्रॉट बाय द सक्शन ऑफ द कंप्रेसर। तो पीछे कंडेंसर कॉइल रहता है, इट इज जस्ट कॉइल, तो इट इज गैस इज रनिंग, ऐसा कॉइल रहता है लाइक दिस। तो गैस इसमें से रन होती है, कॉइल इज ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, तो ये हीट एयर में चली जाती है ना, तो एयर टेम्परेचर के ऑलमोस्ट क्लोज टू द सराउंडिंग टेम्परेचर हो जाता है। फिर से नेक्स्ट साइकिल ऑफ ऑपरेशन इज रिपीटेड। उसको कूल करना जरूरी है, अदरवाइज उसकी एनर्जी कंजम्पशन विल बी मोर, है ना। और यहाँ पर रेफ्रिजरेटर रखा है, यू सी बैक साइड इज लिटिल बिट ऑफ हीटेड अप। वहां पे क्या है, हॉट एयर की जो वेपर की जो एनर्जी अब्जॉर्ब की है उसने अंदर से, दैट इज डिलीवर्ड देयर इन द बैक साइड ऑफ द कॉइल, बैक साइड जहाँ पे कॉइल है। तो अल्टीमेटली टेम्परेचर गोज अप देयर, टेम्परेचर गोज अप देयर मीन्स इट टेम्परेचर ऑफ द एयर ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द पर्टिकुलर रूम विल गो अप। किचन का जो टेम्परेचर है पीछे जो है बार बार उसमें हीट डंप हो रही है, इंटीरियर की हीट बाहर ला रहा है, तो ओवरऑल टेम्परेचर इज also going up in the room where the refrigerator is kept. कभी कभी क्वेश्चन आता है कि रेफ्रिजरेटर को खुला छोड़ दो, ओपन कर दो रूम में, will the room is heated, will be heated up or cold? तो आंसर है heated up, because एक तो रूम जो एनर्जी जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है अंदर से, रेफ्रिजरेटर का डोर खुला हुआ है, वो पीछे उसमें डंप हो रही है, ऊपर से वर्किंग भी हो रही है, कंप्रेसर इज आल्सो वर्किंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कंप्रेसर की एनर्जी जो है वो भी रूम में पाइल अप हो रही है, तो टेम्परेचर ऑफ रूम विल गो अप इफ यू कीप द डोर ऑफ द रेफ्रिजरेटर ओपन। इसीलिए एसी में क्या करते हैं, जो कॉइल है इट इज आउटसाइड ऑफ द रूम। रेफ्रिजरेटर इज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स, वन इज केप्ट इनसाइड द रूम, अदर इज आउटसाइड द रूम। तो रेफ्रिजरेटर को ब्रेक कर दो तो एसी बन जाता है। जो उसके कॉइल वाला पार्ट है इट इज आउटसाइड, तो इट इज डंपिंग द हीट आउटसाइड, इसीलिए रूम ठंडा हो जाता है। अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम, एसी की वर्किंग एंड रेफ्रिजरेटर की वर्किंग सेम है। ओनली थिंग रेफ्रिजरेटर में हीट इज जस्ट रिजेक्टेड देयर इटसेल्फ, एसी में हीट इज रिजेक्टेड आउटसाइड ऑफ द रूम, इसलिए रूम इज गेटिंग कूल्ड। ऑलराइट, तो लेट्स सी इसमें कौन सा टर्म यूज करते हैं। इसमें एफिशिएंसी इज नॉट यूज्ड, इसमें क्या यूज करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, सीओपी, जिसका अल्फा सिंबल रहेगा। इट इज अच्छा हमने रिवर्स किया एरो, और एफिशिएंसी में क्या था, वर्क डन ऊपर था तो इसमें वर्क डन नीचे आ गया, और नीचे Q1 था तो ये Q2 हो गया। तो इट इज द रेशियो ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर। कोल्ड रिजर्वायर से कितनी हीट निकाली बाहर, ये वाले, टू द वर्क डन, कितना वर्क करना पड़ा पर यूनिट ऑफ साइकिल, पर साइकिल ऑफ ऑपरेशन। हीट एक्सट्रैक्टेड पर साइकिल कर लो इसको, वर्क डन पर साइकिल, ठीक है। तो Q2/W, फिर से हीट फ्लो डायग्राम देखो, हीट फ्लोइंग इन और दिस मच, वर्क डन की हीट फ्लो हो रही है अंदर की तरफ, और ये भी, और हीट फ्लोइंग आउट इज Q1। तो हीट फ्लोइंग इन इज इक्वल टू हीट फ्लोइंग आउट, तो W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, सेम आ रहा है फिर से, क्योंकि एरो पूरे रिवर्स हो गए। तो वर्क डन इज स्टिल डिफरेंस ऑफ Q1 माइनस Q2, पुट कर दो यहाँ पर, एंड सिंस टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट, तो इसको T2 पुट कर देंगे और इसको T1 माइनस T2। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज T2 अपॉन T1 माइनस T2, दिस विल बी ग्रेटर देन 1।
coefficient of performance will be greater than 1. We can solve the numerical and see. Infinite नहीं हो सकता, but it will be greater than 1. ठीक है, तो लेट्स डू दिस क्वेश्चन ये वाला. अच्छा, हीट पंप क्या होता है? हीट पंप जो है, इट इज प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल इज सेम, रेफ्रिजरेटर जैसा ही है, बट उसका जॉब इज डिफरेंट. इट इज, इसका पर्पज क्या है? रूम को हॉट रखना where the surroundings are cold, outside environment is cold. So what does it do? बाहर cold environment से heat extract करके room में dump करता है. मतलब outside is refrigerator और inside is room is the back side, it is coil जहाँ पर है ना. तो what is तो इसका heat pump का job है to pump the heat from the colder surrounding to the room which is to be heated. हीटर से भी करते डायरेक्ट, और उसमें ऑक्सीजन कम हो जाता है रूम में. हीट पंप इज देयर, कोल्ड कंट्रीज में दे कैन यूज इट. ठीक है. अच्छा ये बताओ, एसी से रूम कोल्ड कर सकते, आई मीन रेफ्रिजरेटर से रूम कोल्ड कर सकते क्या? बोलो. आई हैव नेवर आस्क्ड दिस क्वेश्चन, नाउ आई एम आस्किंग यू. रूम को, इसमें तो लिखा है आंसर इज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, इफ वी कीप द door open of AC, room will be heated up, not cold. But you can do it. You can keep the room cold. Keep the room cold. कैसे कर सकते हो? देखो, जैसे ये रूम है, यहाँ पर रेफ्रिजरेटर रख दो, उसका कॉइल बाहर होना चाहिए, बैक साइड वाली इट शुड बी. और नाउ यू ओपन द डोर, उसका डोर खोल दो, एंड सच दैट हाफ इज इनसाइड द रूम, हाफ इज आउटसाइड द रूम. तो कॉइल जो है हीट यहाँ पर डंप करेगा. इट विल एक्ट एज ए विंडो एसी. विंडो एसी में क्या होता है? उसका कॉइल बाहर होता है, इट इज नॉट ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स, है ना. स्प्लिट एसी में 2 पार्ट कर देते हैं. विंडो एसी में कॉइल इज कीपिंग आउटसाइड. इट इज एज गुड एज रेफ्रिजरेटर, है ना, जिसका कॉइल जो है, कंडेंसर कॉइल जो है, जो हीट डंपिंग कॉइल है, वो बाहर है. तो एसी कैन बी यूज्ड provided you keep it half inside, half outside the room, and seal the room. Seal room को थोड़ा सा seal कर दो, so that cold air should remain inside. ठीक है. तो ये देखो, coming back to the this question, रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन. तो इसका COP निकालना है. T2 कितना है? कोल्ड रिजर्वायर 9 डिग्री, 9 + 273 कितना आएगा? 282. और T1 is 36 + 273, तो ये आ जाएगा 309 आ जाएगा. ऑलराइट. तो फार्मूला क्या है? T2 डिफरेंस ऑफ T2 इज 282, और ये डिफरेंस जो है इनका 36 and 9, है ना, 27 आ जाएगा डिफरेंस. इफ यू सॉल्व इट 10 point something it will come, 10.4 आ जाएगा. ग्रेटर देन 1 आ रहा है. देखो, वी हैव प्रेडिक्टेड इट विल बी ग्रेटर देन 1. 10.4 is the answer, question number 10 of your NCERT book. All right, एक ही क्वेश्चन है. Now both are related, because AC is the opposite of, I mean refrigerator is the reverse of heat engine. दोनों के बीच में relation होना चाहिए. So let's see how efficiency and coefficient of performance are related. तो यहाँ पे देखो, eta, we know eta is equal to 1 - T2/T1, अभी हमने derive किया सब. तो यहाँ से T2/T1 कितना आ जाएगा? इसको इधर ले आओ, eta को इधर ले जाओ, तो T2/T1 will be 1 - eta. Now writing the relation of alpha, coefficient of performance, ये
इसमें से T1 कॉमन ले लो बाहर नीचे, ठीक है, तो इट विल बी 1 माइनस T2 बाई T1, तो T2 बाई T1 इज 1 माइनस ईटा, तो ये पुट कर दिया। और व्हाट अबाउट दिस 1 माइनस T2 बाई T1 इज नथिंग बट ईटा, तो अल्फा इज 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा, तो ये रिलेशन बन गया। तो बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन वाज दिस, Carnot heat engine having efficiency eta is equal to 1 by 10 as a heat engine is used as a refrigerator by reversing the processes, है ना? If the work done on the system is 10 joules, the amount of heat absorbed from the reservoir at lower temperature. तो अभी एज ए रेफ्रिजरेटर यूज करना है, तो हमें अल्फा पता होना चाहिए, ईटा इज गिवन, तो अल्फा निकाल लो, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा, कितना आएगा ये 1 माइनस 1 by 10 upon 1 by 10, है ना? तो दिस इज कमिंग 9, ठीक है। तो ईटा इज इक्वल टू क्या था यहाँ पर Q2 by W, तो ये 9 है, Q2 निकालना है, वर्क डन दिया है कितना 10, Q2 इज कमिंग 90 जूल्स, तो सी ऑप्शन। Alright, now we'll do that question जो मैंने बीच में छोड़ा था, we'll do that and then wind up. Going back to that question, this one, because this is repeatedly asked, बाद में भी पूछा गया है। देखो ये साइकिल ऑफ ऑपरेशन दिया है, तो डू यू रिमेम्बर कि वर्क डन कितना होता है क्लोज साइकिल में, एफिशिएंसी निकालना है हमें, हमें एफिशिएंसी निकालनी है W अपॉन Q1, तो वर्क डन इज एरिया ऑफ द PV डायग्राम, एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ द लूप कितना होगा, दिस विल बी P2, दिस विल बी V2 इंटू P2, ये आ गया तुम्हारा एरिया ऑफ द क्लोज लूप। वर्क डन तो मिल गया हमें V0 into P, not V0 into P. The difference of these two pressure will be P0 or difference of these two volumes will be V0, तो ये इतना आ जाएगा। बट हीट सप्लाइड निकालना है, तो हीट सप्लाइड में देखो ये प्रोसेस में हीट सप्लाइड होगा पॉजिटिव आएगा, इस प्रोसेस में भी पॉजिटिव आएगा, इसमें माइनस आता है, तो Q1 इज द हीट सप्लाइड, प्लस आ रहा है तो सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को, गैस को, तो heat supplied will be Q1 will be heat supplied in AB process plus heat supplied in BC process, ये एक्यूरेटली निकालना है तुम्हें, इसमें थोड़ा सा you have to be very careful। तो AB प्रोसेस में हीट सप्लाइड कितना है, इसमें कौन सा प्रोसेस है ये, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इट विल बी हीट सप्लाइड इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स इंटू CV इंटू डेल्टा T, और ये वाला कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर, तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू स्पेसिफिक हीट इन दैट प्रोसेस, दैट इज CP इंटू चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो कौन सी गैस है ये, हीलियम इज मोनो एटॉमिक, तो मोनोटॉमिक का CV कितना होता है, डू यू रिमेम्बर एनीबॉडी, 3R/2 डेल्टा T, और CP इज 5R/2 होता है डेल्टा T, ठीक है। तो यहां पर देखो इसमें 3/2 nRT, 5/2 nRT nR डेल्टा T, बट दोनों अलग अलग हैं। देखो यहाँ पे 3/2, एक मिनट,
सी है। एनआरटी को क्या लिख सकते हैं, अपना जो आइडियल गैस इक्वेशन है, एनआर डेल्टा टी को पी डेल्टा वी लिख, पी डेल्टा वी, है ना। तो एनआरटी जैसे पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है ना। तो फर्स्ट प्रोसेस में क्या चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, वी कांस्टेंट है। तो एनआर डेल्टा टी को डेल्टा पी इंटू वी लिख सकते हैं। तो वी तो कांस्टेंट है, कितना है, वी नॉट है, और प्रेशर चेंज हो रहा है, टू पी नॉट माइनस पी नॉट, तो पी नॉट हो गया यहाँ पर। इसमें एनआर डेल्टा टी, बीसी प्रोसेस में क्या चेंज हो रहा है, प्रेशर इज कांस्टेंट, दैट इज टू पी नॉट, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, फाइनल वॉल्यूम टू वी नॉट माइनस वी नॉट, तो ये वी नॉट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले में देखो एन आर डेल्टा टी, सेकंड प्रोसेस में, ऊपर वाले प्रोसेस में प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, वॉल्यूम इज चेंजिंग, किसमें, प्रोसेस बीसी में, और ये किसमें था, प्रोसेस ए बी में। एक में वॉल्यूम चेंज हो रहा है, एक में प्रेशर चेंज हो रहा है, तो जो चेंज हो रहा है उसका डिफरेंस लिखा, जो कांस्टेंट है उसको एज इट इज लिखा। तो हाउ मच दिस इज कमिंग, ये देखो कितना आ रहा है, एलसीएम लेंगे ये 13 आ जाएगा, 13/2 वी नॉट पी नॉट, है ना। तो एफिशिएंसी निकाल सकते हैं अभी, एफिशिएंसी इज W अपॉन Q1, W कितना है, पी नॉट वी नॉट, दिस इज 13/2, 2 पर आ जाएगा, इंटू पी नॉट वी नॉट, इंटू 100 भी करना पड़ेगा बिकॉज परसेंटेज में दिया है, दिस विल गो, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 200/13, 200/13 इज, एक मिनट देखो कितना आएगा, इट कम्स टू बी, कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, 15.4 आएगा, 15.4, इफ यू डिवाइड 200/13 तो इट कम्स 15.4%। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है, ये निकालने की चेक कर देखो, ये एन सीवी, एक तो तुम्हें ये याद रखने पड़ेंगे, सीवी कितना होता है मोनोटॉमिक का, एंड सीपी कितना होता है, दैट इज 3/2 5R/2। फिर एनआरटी को पी पी एंड वी में कैसे कन्वर्ट करना है, आइडियल गैस इक्वेशन से, है ना। टेम्परेचर यहाँ पे प्रेशर की वजह से चेंज हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर इज चेंजिंग देयरफॉर टेम्परेचर इज चेंजिंग, हियर वॉल्यूम इज चेंजिंग देयरफॉर टेम्परेचर इज चेंजिंग, तो दैट कन्वर्ट करना आना चाहिए, ये एनआरटी को, एनआर डेल्टा टी को पी एंड वी में, तो दिस मच इट कम्स। और हीलियम गैस की जगह अगर हाइड्रोजन गैस होता तो सीवी कितना आता, 5R/2, ये 7R/2 आता। तो दैट टेबल हमने जो बनाई है, दैट इज यू हैव टू रिमेंबर, वी मेड वन टेबल, यू नो, थर्मोडायनेमिक्स में या लास्ट वाले में, दी गामा मोनोटॉमिक का गामा कितना, सीपी कितना, सीवी कितना, दैट यू हैव टू रिमेंबर। दिस क्वेश्चन वाज रिपीटेड ट्वाइस in the competitive examination, therefore you should know. एक बार तो पूछा था how much heat is supplied, है ना, तो this much heat is supplied, and second time they have the efficiency, efficiency में work done divided by heat supplied, इसमें heat reject होती है, माइनस आता है इसमें अगर if you solve it. All right, so this was the part we didn't cover, but in competitive examination it is being asked. Anything you want to ask, or shall I end it now? Okay, I will just leave. Class is there after this? Do you have class? Come on.